Hello, good morning to all. This is Sahil and I'm presenting you Pratitih, your daily dose of GK, defense related questions and current affairs, all in one session. So like every day, we will discuss some questions from all these topics, which are important if you're preparing for any defense examinations or any banking or civil service examinations also. So let's start the session. We will start from the current affairs first. First question is related to Falkland Island. It is a, we can say, foreign affairs related question. So Falkland Islands issue is a dispute between which two countries? कौन से दो कंट्रीज हैं उनके बीच में ये इशू चल रहा है फॉकलैंड आइसलैंड्स. So let's see. Correct answer for this is we can UK and Argentina. So let's see the history of this Falkland. तो ब्रिटिश जो थे 1765 में were the first to settle West Falkland, but they were driven off in 1770 by the Spanish, who had bought out French settlement about 1767. So the British outpost on West Falkland was restored in 1771 after threat of war, but then the British withdrew from the island in 1774 for the economic reasons without renouncing their claim to the Falklands. Spain maintained a settlement on East Falkland, which is called Shoalhaven Island, until 1811. In 1820, the Argentina government, which had declared its independence from Spain in 1816, proclaimed its sovereignty over the Falklands. Now, after World War II, that is after the period of 1939 to 45, the issue of sovereignty over the Falkland Islands referred to the United Nations. When in 1964, the island status was debated by the United Nations Committee on Decolonization. So in 1965, the United Nations General Assembly approved a resolution inviting Britain and Argentina to hold discussions to find a peaceful solution to this dispute. And these protracted discussions were still proceeding in February 1982, but in April, Argentina's military government invaded the Falklands. So जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये बात उठी 1965 में, तो जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें बताया गया कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना को दोनों को मिलकर ये डिस्कशन करना चाहिए और एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए दिस डिस्प्यूट का. लेकिन वो इशू चल ही रहा था और वो डिस्कशन चल ही रहा था कि 1982 के फरवरी में वो इशू डिस्कशंस हो रहे थे और अप्रैल में अर्जेंटीना का जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने इन्वेड कर दिया फॉकलैंड को. सो दिस एक्ट स्टार्टेड अ फॉकलैंड आइसलैंड वॉर्स. जो फॉकलैंड आइलैंड वॉर था वो स्टार्ट हो गया, व्हिच एंडेड 10 वीक्स लेटर. 10 हफ्ते के बाद ये एंड हुआ विद द सरेंडर ऑफ द अर्जेंटीन फोर्स एट स्टैनले टू ब्रिटिश ट्रूप्स हु हैड फोर्सिबली reoccupied the islands. Although Britain and Argentina re-established full diplomatic relations in 1990, the issue of sovereignty remained a point of contention. So जो फॉकलैंड वाला इशू है वो यूके और अर्जेंटीना के बीच में चल रहा है. रिसेंटली ये इशू है, दिस इज इंटरनेशनल इशू एंड वेरी बिग इशू, लाइक रशिया एंड यूक्रेन जो भी चल ही रहा है उसी के हिसाब से अगर देखेंगे दिस इज आल्सो ए इशू व्हिच इज बीइंग जो चल ही रहा है 1765 से, इसका हिस्ट्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
दो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें जो कि सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 है उसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। So accreditation can be suspended if a journalist acts in a manner prejudicial to the country's security, sovereignty, and integrity. Second statement, accreditation can also be granted to freelance journalists working for foreign news media organizations. तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है with regard to the central media accreditation guidelines? So recently, the central government has released the Central Media Accreditation Guidelines 2022. Provisions to withdraw or suspend the accreditation क्या है कि if a journalist acts in a manner prejudicial to the country's security, sovereignty, integrity, and friendly relations with the foreign states, public order, or is charged with a serious cognizable offense, so their accreditation will be withdrawn and suspended. So जो पहला स्टेटमेंट था हमारा सही है. Next, if actions are prejudicial to defense or morality or in relation to the contempt of court, defamation or incitement to an offense, तो ये सब कॉज होने पर भी ये जो मीडिया सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस के हिसाब से इनका जो एक्रेडिटेशन है वो विड्रॉ या फिर सस्पेंड किया जाएगा. Accredited media persons have been prohibited from using the word accredited to government of India on public or social media profile, visiting cards, letters, letterheads, or on any other form or any published work. तो उनको अलाउ नहीं है कि वो बता सकते हैं कि वो accredited media persons है, लेकिन उनका जो accreditation है वो खारिज किया जा सकता है इन दो कॉज के बेसिस पे. अभी प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग एक्रेडिटेशन, तो एक्रेडिटेशन को ग्रांट किस किस प्रोविजन पे किया जाएगा. तो एक्रेडिटेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर जर्नलिस्ट लिविंग इन द दिल्ली एनसीआर रीजन. देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज. अ जर्नलिस्ट नीड्स टू हैव अ मिनिमम 5 years professional experience as a full-time working journalist or a camera person in a news organization, or a minimum of 15 years as a freelancer to become eligible. Veteran journalists with over 30 years of experience and who are older than 65 years of age who are eligible. A newspaper or a periodical needs to have a minimum daily circulation of 10,000, and news agencies must have at least 100 subscribers. Similar rules apply for foreign news organization and foreign journalists. इनको भी मिल सकता है. Journalists working with digital news platforms are also eligible, provided the website has a minimum of 10 lakh unique visitors per month. No accreditation will be granted to freelance journalists working for foreign news media organization. So statement 2 गलत है. जो बता रहा था कि जो जर्नलिस्ट फ्रीलांस में काम कर रहे हैं दूसरे फॉरेन न्यूज एजेंसीज के लिए उनको एक्रेडिटेशन मिलेगा, ये गलत है, उनको नहीं मिल सकता. These are the provisions which will grant you the accreditation. पहले आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में रहना पड़ेगा जर्नलिस्ट होकर, और ये सब जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा. तो ये था सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स. नेक्स्ट, अभी हम फॉकलैंड आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के ज्योग्राफी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक बड़ा इश्यू है इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसेंटली इन द न्यूज फॉकलैंड आइलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस. कौन से ओशन में ये सिचुएटेड है, कौन से ओशन में ये पड़ता है. तो लेट्स सी. तो आप बाएं तरफ एक मैप देख पा रहे होंगे. जो फॉकलैंड आइलैंड है वो नीचे की तरफ है, आप
जो फॉकलैंड आइलैंड और उसको मैल्विनस आइलैंड भी बोलते हैं. These are also called Malvinas Islands or Spanish Isles Malvinas. Malvinas Island or Spanish Isles Malvinas, internally self-governing overseas territory of the United Kingdom in the South Atlantic Ocean. हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे इस आइलैंड का, तो यूके ने इसके टेरिटरी को रिगेन कर लिया था. और ये जो टेरिटोरी है ये यूके का इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटोरी है. और इट लाइज अबाउट 300 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का जो साउदर्न टिप है उससे 300 माइल के दूरी पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो एंड ए सिमिलर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन, तो हमें ये आइलैंड दिखने को मिलेगा. द कैपिटल एंड मेजर टाउन इज स्टैनले ऑन ईस्ट फॉकलैंड एंड देयर आर आल्सो सेवरल स्कैटर्ड स्मॉल सेटलमेंट्स as well as the Royal Air Force Base that is located at Mount Pleasant. The two main islands, East Falkland and West Falkland, and about 200 smaller islands. दो बड़े बड़े और 200 छोटे छोटे आइलैंड्स का ये एक समूह है. The government of the Falkland Islands also administers the British overseas territory of South Georgia and South Sandwich Islands, including the Sag and Clark Rocks. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए में क्या था? अटलांटिक ओशन में था, तो ये अटलांटिक ओशन में. This is 300 miles northeast of the southern tip of the South America. Next question, we have given 3 statements regarding a scheme that is called the Nai Roshni scheme. The Nai Roshni scheme is launched for leadership development of women belonging to minor communities. ये पहला स्टेटमेंट है. नई मंजिल स्कीम ये एम करता है to preserve the rich heritage of the traditional arts and crafts of minorities. Ustad scheme aims for formal skilling of school dropouts from minority communities. तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत. So the नई रोशनी स्कीम है, it is a leadership development program for minority women, is a central sector scheme for the women belonging to minority communities in the age group of 18 to 65 years. It was started in 2012 to 2013. The objective of the scheme is to empower and instill confidence among the minority women, including their neighbors from the other communities living in the same village or locality, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with the government systems, banks and other institutions at all levels. Hence statement 1 जो है वो करेक्ट है. दूसरा जो नई मंजिल के बारे में हम पढ़ेंगे, बट ये जो नई रोशनी है ये it run with the help of the NGOs, social society, civil societies and government institutions all over the country. But जो नई मंजिल स्कीम है, this aims to benefit the youth, both men and women. ये जो पहला वाला था वो सिर्फ माइनॉरिटी वुमेन के लिए था, लेकिन ये वाला यूथ को टारगेट किया गया और बोथ मेन एंड वुमेन के लिए. बिलोंगिंग टू 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज. ये 6 जो नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको, उनके जो यूथ है उनको ये बेनिफिट करेगा of 17 to 35 years of age who do not have formal school living certificate, that is those in the category of the school dropouts are educated in community education institutions like madrasas. So statement 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बता रहा था कि the नई मंजिल scheme aims to preserve the rich heritage of the traditional arts and crafts of the minorities. वो गलत है. ये उन यूथ के लिए है जो बिलोंग करते हैं 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, जिनका एज ग्रुप 17 से 35 के बीच में होगा और जो स्कूल लिविंग, जिनके पास स्कूल लिविंग, फॉर्मल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, दैट इज दे आर स्कूल ड्रॉप आउट्स.
और जो कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो जैसे कि मदरसास, उनसे पढ़े हुए हैं, तो ये नई मंजिल स्कीम उनके लिए है. एंड द थर्ड वन इज द उस्ताद. उस्ताद मीन्स अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट. उस्ताद का जो फुल फॉर्म है वो है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल arts and crafts for development. The scheme aims to preserve the rich heritage of the traditional arts and craft minorities. Hence, जो statement 3 है वो गलत है. Statement 3 is not correct. Last question. Which of the following is are consequences of the marine heat waves? Geographical question. Marine heat waves का जो consequences है कि वो क्या है? First, coral bleaching, loss of the Cape forest, higher risk of ocean acidification. तो ये जो 3 कॉन्सिक्वेंसेस है, उनमें से ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेस मरीन हीट वेव्स का कॉन्सिक्वेंस है? मरीन हीट वेव्स क्या है कि these are the periods of extremely high temperatures in the ocean. So these events are linked to coral bleaching, seagrass destruction and loss of Cape forest, affecting the fisheries sector adversely. Studies show that 85% of the corals in the Gulf of Mannar near the Tamil Nadu coast got bleached after the marine heat wave in May 2020. The most common drivers of the marine heat waves include ocean currents, which can help build up areas of warm water and air-sea heat flux, or warming through the ocean surface from the atmosphere. What are the impacts of the marine heat waves? क्या है वो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को? क्या है? marine heat waves affect the ecosystem structure by supporting certain species and suppressing others. Change habitat ranges of certain species. Marine heat waves can change the habitat ranges of certain species such as spiny sea urchin of southeastern Australia, which has been expanding southward into Tasmania at the expense of Cape forest, which it feeds upon. Affect biodiversity. The biodiversity can be drastically affected by the marine heat waves. Increase the risk of deoxygenation and acidification. Often they occur alongside other stressors such as ocean acidification, deoxygenation, and overfishing. So in such cases, MSWs not only further damage habitats, जो marine heat waves है वो सिर्फ habitat को damage नहीं करते, but also increase the risk of deoxygenation and acidification. So option D is correct because the statements 3, coral bleaching, loss of the Cape forest, and high risk of ocean acidification are all the 3 consequences of the marine heat waves. तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रतिथि का सेशन अभी एंड होता है. जस्ट बिफोर एंडिंग दैट आई वांट टू अनाउंस दैट प्रतिथि हैज अ मंथली मैगजीन आल्सो which is published in PDF formats compiled by professionals from all the leading newspapers. It will help you to read the news on the go and stay up to date for any competitive examinations like NDA, CDS, banking, civil services, UPSC, and any other uniform civil service examinations. It has some subscription fee. You can choose as per your convenience. For a monthly plan, you have to pay 100 rupees per month. For a half-year plan, you have to pay one-time fee of 300 rupees. For an annual plan, you have to pay one-time fee of 500 rupees. To subscribe this monthly magazine of Pratitih, you have to visit our website. It is www.warriorscrit.in, and after registering yourself on our website, you will get to know all the details of the subscription process. And for those aspirants who are aspiring to join defense forces, Warriors Crit has brought you this academy which will prepare you, which will give you the instructors for educational instructors and physical instructors, both of which will ensure your proper preparation for these defense examinations, and you can easily clear such examinations like NDA, CDS, AFCAT, CPA, FineNet, Army, SSCGD, Air Force, Navy. All these examinations you can clear easily after preparing with the Warriors Crit. To join us, you have to call on the number given below, that is 9903459583 or 9903429583, or you may just visit our website, that is www.warriorscrit.in. So with this, I conclude today's session. We will meet tomorrow. Till then, do like, share, comment, subscribe.